ओके ये क्वेश्चन में दिया है कि एक्सी प्रोग्रामिंग के ऊपर फंक्शन ये सारा दिया है, ठीक है, जेड एलिमेंट देन द वैल्यू फाउंड बाय द फंक्शन, ठीक है, तो बहुत आसान है. सो लेट्स एनालाइज द सी प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप. द फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ इट टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, एन एरे ए, साइज ऑफ एन एरे एन, देन एन एरे एन, साइज ऑफ एन एरे एन एंड इंटीजर एम, ठीक है, 3 ठो है यहाँ पर. So the function initializes a variable s to the value of the first element of the array a. ठीक है, ठीक है. So the function iterates through the array a from index 1 to n minus 1. ठीक है, or performing the following operations at each. So it multiplies the current value of s by m. Okay, so it adds the current value with respect to this and stores it. So given the array z, अगर z I को हम लोग अगर इस array को लेते हैं 2 for all values of 0 or to I to 9 or n equal to 10. So s initializes to 2. ठीक है. So the loop iterates कितना? The loop iterates 9 times. I equal to 1 to I equal to 9. So in each iteration s is multiplied by 2 and then ai is added. So first iteration में क्या होगा? 2 into 2 plus 2 मतलब 6 आ जाएगा. फिर 6 into 2 plus 2 फिर 14 आ गया. फिर 14 into 2 and so on and so forth until the end of the loop s becomes 50. ठीक है. So the function returns the value m which is 2. Okay, m which is 2. So the value returned by the function will be 2. Okay. Next, the eigenvalues of the matrix x दिया है 1 plus I and 2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 1 प्लस आई होगा तो एक तो 1 माइनस आई होना ही है और एक 2 हो गया. सो डिटर्मिनेंट ये इसी का प्रोडक्ट होगा. सो 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 2. So I square equal to -1 minus of -1 ये 2 हो जाएगा. 1 plus 1 2. So 4 is the answer.